मैं क्लास में हूँ। तुम कैसी हो? तुम कौन हो? तुम क्यों यहाँ हो? बाहर कौन है? टीचर कौन है? प्रिंसिपल कौन है? ऑलराइट, तुम कौन से क्लास में हो? आप कितने साल की हो? ओके, और क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? पापा करते हैं? कोई तैयार नहीं है? सभी तैयार हैं? मैं अंदर हूँ। तुम कहाँ हो? वो बीमार है। वो बीमार था। मेरे पास पैसे हैं। उसके पास पैसे होंगे। वो घर पर होगा। मुझे घर जाना है। वो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। मैं जबरदस्त इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, आज हम एकदम धमाकेदार, एकदम शानदार क्या करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं। और जो हमारी क्या ट्रांसलेटिंग सेशन है टुडे, एक्चुअली दिस इज द ट्रांसलेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड इंटरचेंजिंग, एक्सचेंजिंग classes. So this is also very useful to enhance our confidence in English language. So this is the grammatical portion, translation portion actually, which I am going to shower you ki how can you translate, how can you make sharp actually your skill, your knowledge, your skill, how can you become excellent, fluent, confident to translate, to transform, to extend Hindi to English, English to Hindi, how you can change your mind fluently, confidently. This kind of idea actually I gonna learn in this session. So hope you are going to learn lots of things, lots of idea in this session. So please stay end of the video. I have surety 100%. In the end of this video, you have full confidence, you have knowledge actually how can we become sharp, excellent, superb, alright, in translating. That's also very important. How you are translating in school, colleges, alright. Since 10 years, 10 plus 2, even also you completed your degree actually class 7, 8, 9, 10, 11, 12. These are right now our classes, schooling time actually we learn translate. But whatever translate you are learning, ladies and gentlemen, from writing with the help of your hand, this is not much more effective. Okay? Yeah, this is important. First number you have to translate in your notebook. But secondly, you have to answer, you have to translate, you have to write now, you have to answer face to face. Face to face. Now this is the wonderful, which one help you to speak, to translate, to extend actually while coming here during your lecture, during your write up speech. That particular, that sharp idea make you right sharp to extend, to translate, to put your topic, your opinion actually anywhere. That's why this is very important. So how can people, they are blaming actually when we come here, so we are not getting, when we try to translate to actually we face problem. What sentences, grammatical portion actually not coming in our mind. Why? Because you have not wonderful practice, you have not good alright, practice session. That's why you are facing problem in your life. Okay, alright. So in this session actually we are going to make sharp our mind, alright, and very fast. This is actually, you can say that metro and also very fast translating portion actually we are going to learn. So please try to understand what is the way of right translating, how we can become, how can we make ourselves sharper, faster actually in translating portion, right? So in this session में दोस्तों हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसलेट सीखने जा रहे हैं और ट्रांसलेट की प्रैक्टिस करेंगे, कैसे आप ट्रांसलेट करना चाहिए और आपका क्या लेवल होना चाहिए, किस तेजी से आपको हिंदी समझना है और क्या करना है, फटाफट राइट क्या करना है, खटाखट आपको क्या करना है, आंसर देने की क्या करना है, कोशिश करना है। आज के सेशन में क्या करेंगे, हम एंजॉय करेंगे। तो आप लोग ध्यान से क्या करिए, बातों को समझिए और क्या है, सीखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाउ आर यू? स्टार्ट ट्रांसलेट, सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश क्लास। आप कहाँ हो? मैं क्लास में हूँ। तुम कैसी हो? तुम कौन हो? तुम क्यों यहाँ हो? बाहर कौन है? टीचर कौन है? प्रिंसिपल कौन है? Alright, तुम कौन से क्लास में हो? आप कितने साल की हो? ओके, और क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? पापा करते हैं? कोई तैयार नहीं है? सभी तैयार हैं? मैं अंदर हूँ। तुम कहाँ हो? वो बीमार है। वो बीमार था। मेरे पास पैसे हैं। उसके पास पैसे होंगे। वो घर पर होगा। मुझे घर जाना है। वो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। मैं जबरदस्त इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। ऑलराइट, मैं जबरदस्त परफॉर्म करना चाहता हूँ। मैं टॉपर बनना चाहती हूँ।
Alright, very good, very good. Okay, मैं टॉप करना चाहती हूँ। I want to talk. मैं आपको जानता हूँ। I know मैं आपको नहीं जानती I हूँ। don't know you. यहाँ आया करो। You used to come here. इंग्लिश बोलते रहो। Keep on speaking English. Alright, जो, alright ना? जो बोलना है बोल लो। Speak whatever you want to speak. जितना पढ़ना है पढ़ लो। Learn as much as you want. Alright, learn as much as you Want. Very good. Alright ना? किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। Don't play fast and lose with someone's life. Alright, don't play fast and lose with someone. Life. Alright, मुझे पता चला है कि तुम घर पर हो। I have come to know you are at home. I am कया come to know that you are at home. यार अच्छा होता अगर तुम टॉप कर देती। It could have been better if you talk. If you had talked. If you had talked. Alright, good, right ना. Okay, right. मैं यहाँ नहीं पढ़ता हूँ। I don't want to study here. मैं आपको जानता हूँ। I know बाहर you. जाओ। Go यहाँ आओ। outside. ये मेरा भाई है। It's my brother. Okay, मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। I'm learning English. मैं तुमको नहीं जानती I हूँ। don't know you. तुम कहाँ रहती हो? Where you live? तुमको अंग्रेजी कौन Who पढ़ाता है? teach you English? मैंने खाना खा लिया। I have eaten the food. मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रही हूँ। I have been learning English from two. कौन अंग्रेजी पढ़ाती हो? Whom do you teach English? Yeah, whom do you teach? English. English, right. मैं मुंबई जाऊँगा। I will go Mumbai. I will go मुंबई। मैं मुंबई नहीं जाऊँगा। I will not go Mumbai. Okay, मुझे मुंबई जाना है। I have to go मैं Mumbai. अंग्रेजी बोल सकता I हूँ। can speak English. तुम कहाँ पढ़ती हो? Where you read? कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? In which school we read? वो किसका स्कूल है? Whose school? Whose school Is that? Is that? प्रिंसिपल कौन है? Who's principal? मैनेजर कौन है? Who's manager? कहाँ है? Where? यूनियन बैंक सराय में कहाँ है? Where the Union Bank in Islami? ओके, ये मेरा भाई है। It's my brother. सभी क्लास में है। Everyone in the आज class. संडे है। Today's Sunday. It's a Sunday today. It's a It's Sunday. a Sunday today. Okay, right. मैं पढ़ा सकती हूँ अंग्रेजी। I can teach English. मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ। I can speak मुझे अंग्रेजी English. बोलनी चाहिए। I know. मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। I should speak I English. should speak English. I should speak. English. क्या आप अंग्रेजी बोलती हो? Do you speak English? क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलती Do हो? you not speak क्या आप English? अंग्रेजी नहीं सीखती हो? Do you not learn English? Don't you learn English? Don't you? Learn English. Yeah, very good. बहुत अच्छे, right. So guys, actually you felt something ki what is the what a amazing right na skill and a very sharp intelligence actually she had. How are she answering very fastly, loudly, confidently? Such kind of ideas you must have. How you can gain when practice, how you can actually achieve the way of practicing fastly, confidently. If you practice, if you do right 2-3 days, few days, just you are asking, just you are practicing. If someone asking you same activity if you are applying at home few days, very soon you saw amazing result. Actually you are also speaking, you are also answering, you are also translating, you are also exchanging Hindi to English fastly, confidently. That's a very simple, effective and practical way to enhance your confidence level. That's why very important, ladies and gentlemen. So you have to apply same activity at home where you are practicing the much. The more you practice, the more you gain. The more you practice, the more you learn. The more you practice, the more you clear whatever concept, whatever problem actually you have in your mind, where you have problematic issues, problem in your life, whatever where you are studying while speaking, while talking, right? Each and everything actually you can clear. By practicing more. Practice is the key to success. Practice to make you perfect. Practice, this is when which you can write, make you write, super and proper champion anywhere. So that's why please practice more. Reality work you have to do. Real work means by yourself, but your mind you have to practice. You have to practice continuously without fixing any time, any time. This is the excellent. This is the excellent. Now you can clear whatever concern actually you are facing here. Each and everything you are feeling, you are realizing. Actually, that's very simple. That's very simple. So hope you will do apply this activity in your life, and very soon you are going to get amazing kind of result in your life. Have a good day. Nice to meet you. Nice to talk you. Connect you. All right. Love you. Love India. Wish you all the best. God bless you. Thank you very much.